So आज का session है, it's about composition and elements. ठीक है. So what you mean by composition we'll see forward, and after this we'll have a overview कि हम session में क्या क्या करने वाले हैं. जब तक ये आंटी जी खा रही है पानी पूरी, we will have the session. And yeah, by the way, pani puri looks delicious. And moving forward, I just request you guys to take out your sketchbook, and because instead of just writing it down, it is more efficient and effective if you guys just doodle it. So if I'm like saying something, just doodle it, a small thing like this and this. It will be more efficient. This is something that I had learned from one of my mentors, and he was from IIT Delhi. So yeah. So just take out your sketchbook. I'll just wait for 2 minutes. So first we'll start with an introduction about myself, and I'll share some of my works about that I did for UCEED as well as NID. And then we will understand what are the elements of a good drawing, not composition, but a good drawing. Then we will look forward to what is composition, right? Then after composition, we will see why we need a composition. So because this is a very important thing. So for design exam, there's something called design thinking that I believe for design exams. और उसमें एक important चीज होती है, that is why. Ask why every time. क्योंकि if you're doing something, you need to ask why we are doing it, right? And it's the most fundamental thing that you should be doing while solving any question, whether it's for UCEED, whether it's for NID. So this is a very nice question, that is why we need a good composition in the first place. Okay, then we will see effective and efficient, why it makes our process more effective and efficient. And then we'll see some elements of a good composition. Okay, there are free resources at the end of the video, or at the end of the session, sorry. So just stay with me, and because these resources are very helpful, that have helped me and a lot of people from NID and IIT during their preparation. So just wait till the end. So hi, I'm Ujjwal Rathore, and I'm from NID Bhopal. Apart from this, I also got a seat at IIT Roorkee. But unfortunately, you guys might be wondering why I chose NID Bhopal over IIT Roorkee. So I'm from commerce, so nahi tha luck. I couldn't join IIT Roorkee because they require only math students. And I'm from commerce, so I have to go with NIT Bhopal, which is fairly good and very close to my home. During my preparation, I've seen a lot of loopholes. जैसे for part A के लिए we don't have a lot of resources on the internet, or drawing के लिए भी they are more oriented towards fine arts, not towards design exams. So my ideology revolves around that only. कि I want to fill those portholes that is there. So my interest revolves around drawing. So आज तो मैं drawing के ऊपर session लेने वाला हूँ, but in future if you guys connect with me, I guess we'll be taking session on aptitudes also, but अभी तो drawing के ऊपर ही main focus है. And also one important thing, that is design thinking. So a lot of you might be preparing for NID. Now I'll be showing you some of my works that I did during my UC preparation, and it will be more towards composition works. So let's just show you. So like these are my works that I did for UC preparation, and these works are done under 30 minutes barely. So yeah, 30 minutes के अंदर करें, and all these works are from imagination and based on a question that I practiced. Human figures again, mainly composition works. Moving forward, are you guys familiar with this question? Just give me a thumbs up. Yeah, so people are. So इस क्वेश्चन में था कि पोको है एंड नंदू का एक डांस कंपटीशन चल रहा है, एंड हिज मदर इज हेल्पिंग हिम, एंड पोको सब चीज डिस्टर्ब कर रहा है बेसिकली. सो दिस वाज माय अटेम्प्ट ऑन इट, which is fairly good, I say, and we'll discuss why this composition is good and what are the key elements of it. Now the next slide is going to be very interesting because I'll be showing you my improvement over the months, and that is something that is really required for you guys. So yeah, you can see ये वही क्वेश्चन है पोको वाला and नंदू वाला. ठीक है, पोको and नंदू वाला. I attempted this one in the June month. तो तुम यहाँ देखोगे there is no sense of perspective here. ठीक है, perspective नहीं है. The line quality is very bad, and fairly कोई composition नहीं है. That's why it took me around, this question took me around 40 minutes. ठीक है. Now over the months of preparation and improvement, this was a question that I did during the month of October. So now you can see a better composition, but line quality again is poor. Then I have used a perspective that is 1 point, right? तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मैंने इसको क्रिटिक कराया था बाय वन ऑफ माय मेंटर, इज फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, एंड ही सेड कि यार तेरी ड्राइंग बहुत फ्लैट. सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट स्टिक टू द कंपोजिशन. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द एक्चुअल लेक्चर. तो अभी तक तो मेरा इंट्रोडक्शन था, मेरे वर्क्स थे, एंड वी वर जस्ट सीइंग द वर्क एंड ऑल दैट. बट अब सेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ
drawings, and then we'll see what is composition, why we need the composition in the first place, and yeah, basically. I would So वही है, मतलब देखो, आई हैव सीन वर्क्स ऑफ पीपल, अभी ग्रुप में भी कुछ लोगों ने ड्राइंग डाली थी अपनी, एंड पीपल आर गुड विद फाइन आर्ट्स. सो आखिरी में मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट देने वाला हूँ, तो उसमें आप देखोगे कि मैं फाइन आर्ट बहुत पहले से कर रहा हूँ, बट दैट इज नॉट द थिंग. फाइन आर्ट में आप कितने भी अच्छे हो, बट ड्राइंग फ्रॉम इमेजिनेशन इज समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, राइट. तुम देखोगे मेरा जो जून वाला अटेम्प्ट था वॉज वेरी पुअर, बट उस टाइम मेरी फाइन आर्ट की स्किल्स वॉज वेरी गुड. सो imagination से draw करना है something completely different. So that is what we have to train ourselves for design exams, and that is what the core thing is, I guess. Yeah. आई गेस ये चीज काफी लोगों ने फेस करी होगी जब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा, देन दे रियलाइज के टाइम के अंदर बनाना तो मुश्किल है ही, एंड इमेजिनेशन से बनाना इज वेरी डिफिकल्ट. Right. Yeah. तो उसके बारे में भी देखो, इस सेशन में तो बहुत सारी चीजें, लाइन क्वालिटी हो गया, इमेजिनेशन हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज हो गया, तो एक सेशन में तो इंक्लूड नहीं हो पाएगा वो. तो मैं एक्सरसाइजेस भी बताने वाला हूँ ताकि इमेजिनेशन से कैसे improve करें. एंड all this exercise that I'll be telling you in the further sessions will be some exercises, all of the exercises are being followed by people फ्रॉम NID and IIT. तो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सारे लोगों से बात करी थी जो IIT में थे ऑलरेडी, NID में थे, एंड दे गेव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट कि वो प्रिपरेशन के टाइम क्या करते थे. लाइक you can also follow this, just go on Instagram, just approach all these people who are right now studying in NID or IIT, और उनसे पूछो कि what were the core things you are doing जब तुम्हारा प्रिपरेशन चल रहा था. Is any particular exercise that you are doing, live sketching हो गया, या फिर for line quality, and anything, any particular website that you guys were following. So तुम जितने लोगों से भी बात करने वाले हो, सब लोग एक अलग insight देने वाले हैं, and which is very interesting, क्योंकि तुम्हें सब लोगों का एक टच मिलने वाला है, and then you will have a collective knowledge about it. Elements of good drawing. ठीक है. So पहली चीज होती है, देखो मैं कवर करने वाला हूँ इन ऑर्डर ऑफ इट इम्पोर्टेंस, कि तुम्हें जब एग्जामिनर चेक करने वाला है तो वो पहली चीज क्या देखने वाला है और किस पे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट इज देयर इज लाइन क्वालिटी. ठीक है, लाइन क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब व्हाट आई मीन बाय लाइन क्वालिटी इन जनरल इज, ओके, सो लाइन क्वालिटी में दो टाइप की होती है, एंड आई थिंक 90% ऑफ पीपल राइट नाउ आर मेकिंग लाइन्स लाइक दिस. ठीक है, तो एक लाइन होती है ऐसे, ऐसे हम घिस कर लाइन चलाते हैं. ठीक है, and something like this. So if we have to make a cube, we will make something like this, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, like something like this. लाइन घिसेंगे बार बार, then we'll making like this, ऐसा 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 ऐसा. तो अगर ये करके आने वाले एग्जाम में, तो डोंट एक्सपेक्ट marks from the examiner. तो ये सब नहीं करना है. You have to make lines which are very clean, very sharp. You have to make lines like this. You have to make lines like this. ठीक है, तो इस टाइप से लाइन बनानी जो एक बार में हो, लाइक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यू आर मेकिंग लाइंस लाइक दिस, यू आर नॉट मेकिंग लाइंस लाइक दिस 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 दिस. अगर ऐसा कुछ करने वाले हो तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, नो मैटर हाउ गुड योर कंपोजिशन लुक्स, हाउ गुड योर ह्यूमन फिगर्स लुक. अगर लाइन क्वालिटी करती इस टाइप की, तो आई डोंट थिंक तुम्हें मार्क्स मिलने वाले. ठीक है, सो वी आर डन विद लाइन क्वालिटी. इट्स प्रीटी सिंपल, और इन द फर्दर सेशंस हमारे जो होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि लाइन क्वालिटी इंप्रूव कैसे करते हैं. राइट, इट्स सम फॉर दैट अगर किसी को ज्वाइन करना है इनकी प्रिपरेशन, सो कुड फिल दिस फॉर्म. ठीक है, मैंने चैट बॉक्स में पिन कर दिया. तो another thing that we have is observation, right? They will be seeing your observation. So इसका क्वेश्चन था कि तुम एक चाय की टपरी पे हो, so चाय की टपरी नहीं था उसमें क्वेश्चन में, it was a tea stall, but yeah, चाय की टपरी पे हो, and what मतलब you are just using your mobile phone and something like that. ठीक है, तो अब ये जो डॉग है, ये मैंने खुद से ऐड करा है, राइट. तो कभी ना कहीं तुम चाय पीने गए होगे, and there are a lot of things that is around you, right? You might have seen a dustbin which is filled till like ऊपर तक, and then कुल्हड़ वाली चाय पी रहे हो तो कुल्हड़ टूटे हुए यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक डॉग दिख सकता है, यूं कैट दिख सकती है, एनीथिंग, राइट. टिश्यू पेपर हो सकते हैं, एनीथिंग. अगर you can add your own flavor to it, so like maybe you can show raining and you can show mud on the floor, anything, right? So that is what they check. कि ऑब्जर्वेशन में यही है कि अगर उन्होंने कुछ मेंशन करा है, लेट्स से दे हैव मेंशन्ड टी स्टॉल, राइट, तो आप उस सिचुएशन को कितने अच्छे से समझते हैं, राइट. तो जस्ट व्हेनेवर द क्वेश्चंस कम फॉर अ पर्टिकुलर एरिया की टी स्टॉल हो गया या फिर स्टेशनरी शॉप हो गया, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि आप लास्ट टाइम जब विजिट कर रहे थे उस प्लेस को, तो क्या एक्सपीरियंसेस थे. And I am pretty sure every single person would have something different, right? Experience में. Some might have seen people, arguing with each other. कोई कपल्स को देखते होगे आपस में लगे हुए बैठे हुए हैं, राइट. तो सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, और वो तुम अगर बता रहे हो उस सिचुएशन में, दैट इज समथिंग दैट विल अपस्केल योर मार्क्स, एंड दैट कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन. So in
आगे जो सेशन होगी उसमें हम इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक्स है, लाइक लाइन क्वालिटी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया. नाउ कमिंग टू originality is very much related to observation, but originality is like observation में all the natural things that will be present in that particular situation तुम्हें वो डिपिक्ट करनी है. एंड ओरिजिनलिटी में क्या आता है अपार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन इज योर पर्सनल टच. ठीक है, तुम उसमें पर्सनली क्या ऐड कर रहे हो, लाइक आई सेड कि पीपल माइट बी आर्गुइंग एंड ऑल दैट, वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस. और अगर तुम उसको ओरिजिनलिटी में ऐड कर रहे हो, दैट इज लाइक ऑब्जर्वेशन प्लस पर्सनल टच, दैट इज ओरिजिनलिटी, राइट. सो नाउ द लास्ट थिंग, दैट इज लाइन वेट एंड अटेंशन टू डिटेल्स. Now line weight can be categorized under line quality, but मैंने यहाँ पे इसको अलग रखा है. तो line quality is line weight is something which gives depth, right? तो समझो तुम यहाँ पर बैठे हो, right? You are sitting here. तुम यहाँ बैठे हो, अब तुम्हारे सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, let's say कुछ भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर एक दूर रखा हुआ है यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है, तो इन ऑर्डर टू डिपिक्ट कि कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, you will make it more darker. You will give more weight to the line to टेल कि यार ये चीज मेरे पास है, इंस्टेड ऑफ जो चीजें दूर है, लाइक यू कैन सी दिस अंकल, यू कैन सी दिस पोल, यू कैन सी दिस वायर, एनीथिंग, लाइक इनकी बहुत पतली लाइन है, राइट. बट इफ वी सी समथिंग लाइक टिश्यू पेपर, वी समथिंग लाइक कुल्लर, वी सी समथिंग लाइक चाय, द हैंड, यहाँ पे लाइन वेट इंक्रीज हो गया. सो दिस इज इन ऑर्डर टू शो कि समथिंग इज क्लोजर, समथिंग इज फादर अवे फ्रॉम यू. सो या बेसिकली लाइक दैट. तो ये हो गया लाइन वेट के अंदर. सो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या कवर करा है. लाइन क्वालिटी बहुत मैसी हो गया है, सॉरी गाइस, बट आई एम एबल, आई थिंक तुम लोगों को समझ आ रहा है. लाइन क्वालिटी में आता है कि घिस घिस का लाइन नहीं बनानी है, यू हैव टू मेक इट इन अ वन स्ट्रोक. इज और बैकग्राउंड. नाउ ठीक है, ये तो समझ आ गया कि फोरग्राउंड है, ये मिडग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है, राइट. फोरग्राउंड, मिडग्राउंड एंड बैकग्राउंड. बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये डाउट तो अभी आ रहा होगा ना माइंड में कि इंपॉर्टेंट क्यों है. सो लेट मी गिव यू वन स्मॉल, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस. तो क्या होता है, जैसे एक हम लेते हैं एक सिंपल सी ड्राइंग, आई गेस वो एट द एंड है, सो जस्ट लेट मी ब्रिंग इट हियर. ओके, हाँ. तो तुम इसको देखोगे, सो दिस वाज माय ड्राइंग दैट आई डिड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है. तो बहुत बेकार स्किल्स थी जब, एंड दिस वाज लाइक माय स्किल्स बाय सेकंड अटेम्प्ट. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, दोनों अलग स्केच है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द डिफरेंस. तो हाँ, वी वर डिस्कसिंग अबाउट फोरग्राउंड, मिडग्राउंड एंड बैकग्राउंड. नाउ हाउ इट हेल्प्स इज, in this particular sketch you can't see any foreground. You might say कि ये foreground है, हमारा ये foreground है, but I don't think ये foreground है. It can be considered a midground, right? So इस पूरी situation को करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है. Now क्यों? क्योंकि ये हमें एक एक चीज़ें बनानी पड़ेंगी, like इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, this everything है ना, बनाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है. So time goes up because we have to draw every single thing when we are not using foreground. अब हमने यहाँ पे foreground यूज कर रहे, तो अगर कोई चीज हमसे पास में है तो it will look bigger ना. It's just common sense कि कोई चीज हमारे पास है तो it will look bigger, तो it will capture a good amount of space. तो अगर हम किसी चीज को foreground में रखते हैं तो ये इतनी स्पेस ले रहा है, समझ रहे हो तुम लोग, ये इतनी स्पेस ले रहा है, तो हमारा पेपर इतना बड़ा है, तो हमें इतनी स्पेस पे बनाने की जरूरत ही नहीं है. You guys got it? तो ऑटोमेटिकली when we are using foreground, हम चीजों को बड़ा बना रहे हैं और उससे हम हमारी स्पेस को भर रहे हैं, एंड बाय दैट मीन्स वी आर सेविंग टाइम. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है या फिर मैंने ढंग से नहीं समझाया है, बाकी अगर समझ आ गया तो a thumbs up would be a very good thing. Oh nice, great. तो समझ आ गया ना कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो तुम्हारे टेक्निक में गलती है, राइट. सो बाय यूजिंग फोरग्राउंड, anything which is closer to you will appear bigger, and when you are making things bigger it is covering a large amount of space. तो उसके कारण तुम्हारा पेपर का जो स्पेस है वो कवर कर रहा है, तो उसके कारण तुम्हारा टाइम कम होगा, तुम जल्दी से जल्दी पेपर भर दोगे. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. सो या दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग फोरग्राउंड, मिडग्राउंड एंड बैकग्राउंड. तो अभी के लिए यही आइडिया रखो. इस पे पूरा एक डिफरेंट सेशन होगा जिसपे हम डिस्कशन करेंगे फोरग्राउंड के बारे में, मिडग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में इन डिटेल, राइट. क्योंकि ये कॉम्पोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई बिलीव. तो अभी के लिए इतना ही चीज है, ठीक है. अगर तुम्हें समझ आ गया है कि हाउ वी कैन सेव टाइम विद द गुड कॉम्पोजिशन स्किल्स एंड बाय यूजिंग फोरग्राउंड, तो नाइस. Now we are moving forward to our last topic, that is composition rules, right? So composition ये बहुत simple है, I guess all of you know it, but those who don't, I will just demonstrate. This is known as rule of thirds.
ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स. सो व्हाट यू मीन बाय रूल ऑफ थर्ड्स इज कि लेट्स से हमारे पास इतना फॉर्मेट है जो हमें एग्जाम में मिलेगा. सो इफ वी डिवाइड इट हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली इनटू 3 पार्ट्स, है ना, और ये जो पॉइंट आएंगे हमारे पास, दिस आर पॉइंट, फोकल पॉइंट. और या तो यहाँ पर हम जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, तो हमारे व्यूअर की आईज सबसे पहले उधर ही जाएंगी, राइट. लेट्स से लेट टेक एन एग्जांपल. Let's take an example. So yeah, this one. Now we just divide it into 3 equal parts. So like this, like fairly like this. तो ये हमारा point हो गया पहला. This is second point. This is third point. This is fourth point. Now we see this particular girl is kept on this particular point and this particular point. तो हमारा first जो focus रहेगा वो इस लड़की पे जाएगा, then इन अंकल पे, then इन भाई साहब पर. तो हाँ, fairly so simple है. जिस पे भी हमें पहला इंटरेस्ट जानना है, here also it is kept on focal point. तो इस पे हमारा पहला इंटरेस्ट जा रहा है, फिर इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, ठीक है. तो सिंपल है, अगर कोई चीज को हमें इंपॉर्टेंस देनी है तो वी विल keep that thing on the focal point. It is as simple as that, right? Importance is equal to focal point. Simple. And now one important thing, ये वाली technique a lot of people uses, and I think जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, those are people are in IIT or NID, everyone uses it for composition skills. तो एक principle होता है, that is 20-80 principle, है ना. तुम सबको मालूम होगा कि 20% of things contribute for 80% of the results, or yeah 80% of things. So it is just like that. जैसे मैंने foreground, midground and background के बारे में बताया, and also this rule of thirds. ये कुछ बेसिक रूल्स है, इसके बेसिस पे हमारी 80% ऑफ कॉम्पोजिशन ड्राइंग बनने वाली. अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाले रूल ऑफ थॉट्स, बट जस्ट आई एम गिविंग एन ओवरव्यू. तो ये पूरा सेशन, डोंट थिंक कि कॉम्पोजिशन पूरा कवर हो जाएगा इसमें. इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द होल थिंग, राइट. अभी रूल ऑफ थर्ड बोला है तो ये नहीं कि रूल ऑफ थर्ड यहीं खत्म हो गया. देयर इज लॉट टू इट, बट जस्ट एन ओवरव्यू सेशन, तो मैं इतना ही बताने वाला हूँ. नाउ अनदर थिंग विल जस्ट कवर इट क्विकली, that is triangular composition. Triangular composition is used when we have 3 main subjects in a flat ground. So like here we can see this particular thing, and this particular thing. These are forming a triangular composition. Now we see here this particular thing, and this particular thing. They are forming a triangle. Here also they are forming an inverted triangle. So basically हमें अगर किसी को बताना है something like this and something like this, someone is standing here and someone is standing here, right? They are forming a triangular composition. So triangular composition इतना ही है. ये सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, just as I said earlier. So just an overview about it. Now this is something which we use rarely. This is called slant composition. स्लैंट कॉम्पोजिशन तो तुम में से बहुत से लोग एनिमे देखते होगे, राइट. मैं नहीं देखता, बट आई नो अबाउट इट, एंड मांगा पढ़ते होगे या व्हाटएवर. सो उसमें बहुत सारे तुम्हें फ्रेम्स दिखेंगे जहाँ पे कैरेक्टर्स ऐसे आड़े रहेंगे, राइट. द कैरेक्टर्स आर लाइक दिस. इंस्टेड ऑफ, जैसे ये फ्रेम है तुम्हारी, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रेट लाइक दिस, कैरेक्टर्स ऐसे रहेंगे जैसे ये है, एंड दे आर लाइक दिस, दे आर प्रीटी मच लाइक दिस, राइट. ऐसे स्लैंट रहेंगे. अब ये कॉम्पोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट गिव्स अ टच दैट वी कॉल डायनेमिक. डायनेमिक टच लिया आता है हमारी कॉम्पोजिशन में, इसलिए इसको हर जगह यूज नहीं करते. जब भी हमारा लोअर पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पर चीजें बहुत एक स्ट्रेंथ है उस कॉम्पोजिशन में, जैसे लाइक लेट्स से एक बुल है, वो भाग रहा है मार्केट में, एंड वी वांट टू डिपिक्ट दैट सिचुएशन वेरी नाइसली. वी वांट टू डिपिक्ट दैट सिचुएशन विद लॉट ऑफ डायनामिज्म इन इट. तो हम स्लैंट कॉम्पोजिशन यूज कर सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द फर्दर सेशन. जस्ट एन ओवरव्यू. नाउ दिस इज नोन एज ओवरहेड पॉइंट ऑफ व्यू और अ कॉम्पोजिशन, जहाँ पर एक पर्टिकुलर इंसान के साइड से कैमरा आता है जिसमें वो भी दिखता है, एंड द पर्सन दैट विल बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम वो भी दिखेगा. सो बेसिकली लाइक अगर हमारे पास 2 इंसान है, ये हो गया चिंटू, ये हो गया मिंटू, ठीक है. तो अगर हम चिंटू के यहाँ पे कैमरा रख देंगे लेट्स लाइक दैट, और ये यहाँ से देखेगा तो हमें चिंटू भी दिखेगा एंड मिंटू भी दिखेगा. सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कैमरा रख देंगे तो हमें मिंटू भी दिखेगा एंड चिंटू भी दिखेगा. सो इट इज जस्ट लाइक दैट. दैट इज कॉल्ड ओवरहेड composition. So I guess with this we come to an end, and we fairly covered. Let's have a quick
थिंग लाइक हमने पहले हमारे वर्क्स देखे, देन वी सी मोर ऑफ वर्क्स एंड वी सॉ कि इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ ओवर द मंथ्स. We discussed elements of drawing, that is line quality, observation, originality, line weight and attention to detail. Oh sorry, मैं attention to detail बताना भूल गया था, by the way. So attention to detail is nothing but adding details to the things which are closer to you. मतलब let's stop here. तो जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, राइट, चिंटू यहाँ खड़ा है, चिंटू के पास एक चाय का कप है, ठीक है, यहाँ पर एक टेबल रखा है दूर, है ना, एंड थिंग्स आर लाइक दिस. तो चिंटू के लिए इंपॉर्टेंट थिंग ये रहेंगी विच इज क्लोजर टू हिम, और ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी तो ये उससे दूर है. तो यहाँ पर अगर तुम सोच रहे हो कि ये टेबल है, अगर मैं इसमें वुडन टेक्सचर बता दूं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग विच यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू. बट इफ यू मेक कुल्लड़ के ऐसे जो टेक्सचर होता है, अगर उस पर तुम बनाओगे तो यू आर ड्रॉइंग अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो चिंटू को वो अच्छा लगेगा, और चिंटू के जो एग्जामिनर है, हमारे जो एग्जामिनर रहेंगे आईटी के, उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर तुम ये करोगे. सो दिस इज बेसिकली अटेंशन टू डिटेल. जिस भी चीज को तुम्हें इंपॉर्टेंस देनी है उसमें डिटेल डालो, जो चीज तुम्हारे पास है उसमें ज्यादा डिटेल दिखाओ, जो चीज दूर है उसमें कम डिटेल्स दिखाओ. दिस इज नॉन एज अटेंशन टू डिटेल बेसिकली. We discussed very important thing, that is foreground, midground and background. Then we discussed rule of thirds, then triangular composition. ठीक है, overview था ये, it's not a detailed class, it's just an overview. We see slant composition, यहाँ पर हमने देखा overhead composition, and we discussed about why we need a good composition, how it can save time and it's effective and efficient. तो जैसा मैंने सेशन के शुरू में प्रॉमिस करा था कि देयर विल बी फ्री रिसोर्सेज एट द एंड, तो मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आई गेस मैं तुम लोगों के डाउट ले लेता हूँ एंड देन विल मूव फॉरवर्ड. See, why am I preparing for that? I mean, था तो कपड़े बनाना, अभी क्या कर रहे? So it's kind of a mismatch for me. Okay, see, first of all, if you don't want to go to left, I understand the reasons that are there. मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, बट हाँ, इफ योर इंटरेस्ट लाइज इन फैशन डिजाइन एंड ऑल दैट, तो तुम एनआईटी जाकर भी टेक्सटाइल डिजाइन परस्यू कर सकते हो ना, जब भी तो वहाँ पे फील्ड है. तो इट्स नथिंग कि तुम्हें आईआईटी जाना है, और आईआईटी में भी कोई फील्ड नहीं होती है, तो 4 साल यू आर ओपन टू व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो, और इट्स अप टू यू. सो एज मेरे से बात कर रही हो तो आई एम अ पर्सन विच इज वेरी मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स बिजनेस ऑफ आइडिया ऑफ थिंग्स एंड all that. तो मुझे डिजाइन में यूजर एक्सपीरियंस, इंटरैक्शन डिजाइन विच विल एड अप टू द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है. बट आई एम ओपन टू इंडस्ट्रियल डिजाइन ऑल्सो, दैट विल आई बी एक्सप्लोरिंग वंस आई गो टू एनआईटी. तो हाँ, दैट इज प्रीटी मच अबाउट माई सेल्फ. सो ऐसा मत सोच अभी कि मुझे यही करना है, फैशन करना है या फिर इंटरैक्शन करना है. यू आर ओपन टू दैट. तुम हाँ एक बार जाकर, दैट्स व्हाई फाउंडेशन ईयर इज दैट, राइट. हाउ टू ओवरकम बीइंग इंट्रोवर्ट while doing live sketch. Damn young while doing so overcome being introvert. तो अच्छी ड्राइंग स्किल्स है तो फिर लोग अपने आप अप्रिशिएट करने वाले हैं, और नहीं है तो फिर थोड़ा इंट्रोवर्ट के साथ डील करना, क्योंकि तुम बना रहे हो, लोग हंस रहे हैं, तो वो होगा. बट यू हैव टू ओवरकम दैट थिंग. सो वी विल हैव टू नो क्वेश्चन. यस, वेरिएशन वालों के लिए बता दीजिए. तो पीसीएम वालों के लिए तो देखो थोड़ी मेहनत कर लेना, बस सप्ली मत लाना, क्योंकि मैंने बताया कि अगर एनआईटी में सप्ली वालों को एडमिशन नहीं मिलता है. अनदर थिंग इज, अगर तुम पीसीएम से हो तो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हारे लिए आईआईटी गुवाहाटी एंड आईआईटी रूरकी इज ओपन, ऑल्सो ट्रिपल आईटी जबलपुर. मैं कॉमर्स से था तो मुझे अभी आगे वाले राउंड में आईआईटी गुवाहाटी भी मिल जाएगा, और अभी आईआईटी रूरकी मिल रहा था, बट आई कुडंट जॉइन बिकॉज आई वाज नॉट फ्रॉम पीसीएम. तो ठीक है, पीसीएम थोड़ा हार्ड होता है, बट जस्ट से की अच्छी बात है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन टू योरसेल्फ. And that question, like उसमें सब दिया होता है, the viewpoint and the all the details. So उसमें कैसे creative हो सकते हैं and unique. Okay. लेकिन we discuss the garage question अभी जो आया था उसके examples. Okay. So देख, UCEED में ज़्यादा यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है, to be honest if I say. NID वाली चीज़ है वो यूनिक होना. UCEED में बस यही है जो मैंने एलिमेंट्स भी बताए तुझे, लाइक लाइन क्वालिटी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑल दिस थिंग्स वर देयर, राइट. तो इन सब चीज़ों को बस उसमें डिपिक्ट करते हैं विद गुड एंगल, विद गुड स्किल्स. बाकी बीइंग यूनिक इज नॉट देयर, क्योंकि हाफ ऑफ द पीपल आर कमिंग फ्रॉम जेई छोड़कर कोई इधर यूसीड देने आ रहा है, एनआईडी वाले देने आ रहे हैं, तो बहुत लोगों की स्किल्स ही तो पहले अच्छी नहीं होती है, ठीक है. उसके बाद तो इतना यूनिक होने की जरूरत नहीं है. अगर तुम सब फॉलो करोगे एलिमेंट्स जो मैंने बताए, तो यू कैन फेयरली स्कोर वेरी डिसेंट मार्क्स. यूनिक होने के चक्कर में कभी कभी सब बिगड़ जाता है, एंड देन एग्जामिनर, क्योंकि देखो हम नहीं जानते, बिकॉज इट बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आती है, तो मे बी एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगे, उन्होंने पूछा कुछ है और तुम यूनिक के चक्कर में बना कुछ और रहे हो,
तो कोई सेंस नहीं बनता. तो just try to stick to the elements that we discussed. Yeah. So Anandi, this is the last question I'm taking. Just tell me. Yeah, how to prepare for GAT of UCEED? Okay. So देख, we will have a dedicated session towards party also. तो मैंने पूरी PDFs बना रखी है, like मैंने बहुत सारे tips and tricks discover करी है during my preparation, and I've talked to people from IIT also. तो उन्होंने भी मुझे बहुत सारे tips बताई है, and yeah, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे. बट मैथ्स, टू बी ऑनेस्ट, लोग बोलते हैं कि यार मैथ्स नहीं चाहिए, 10 तक की मैथ्स चाहिए. बट अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है ना, तो तुम्हारा माइंड शार्प रहता है, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस वेरी इजीली एज फॉर नैट पार्ट. बट अगर तुम नेट पार्ट में इतना इग्नोर करोगे एंड यू आर गुड विद एमसीक्यू एंड एमएसक्यू, तो स्टिल यू कैन क्रैक इट. बट हाँ, ऐसी हाई लेवल की मैथ्स नहीं चाहिए. जस्ट गो अहेड विद द पीवाईक्यूज, एंड इफ यू एनालाइज देम यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसा फॉर्मूलाज आएंगे नहीं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, देन यू विल हैव साइन थीटा and all these things. तो उससे रिलेटेड थोड़े इमेजिनेटिव क्वेश्चंस आएंगे, ये नहीं कि फॉर्मूला पूछ लिया. तो मैथ्स इतनी नहीं आएंगी, बट बेसिक मैथ्स प्रैक्टिस कर लेना, एंड विल डिस्कस ऑन पार्ट ए ऑल्सो. जितने भी लोगों के भी डाउट है, सॉरी, रिगार्डिंग पार्ट ए जर्नी पे बताइए एंड ऑल दैट. सो विल पार्ट ए से रिलेटेड स्कोर क्या था, पार्ट ए के लिए कैसे प्रिपरेशन करी थी एंड ऑल दैट, विल डिस्कस इन द फर्दर सेशंस. So hello everyone. I hope तुम लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, because that's the whole motive of the session, to teach something new related to design exams. वही किससे पिटे फाइन आर्ट्स के टॉपिक तो नहीं, right? तो वही है. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर देना, and apart from that, अगर कुछ भी डाउट हो, just let me know in the comment section so I can design my session according to that. Thank you guys. See you in the next video. My name is Devansh. I'm the founder of Divergent classes. Hopefully आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, and do let us know कि सेशन कैसा था by commenting down below and liking this video. उसके अलावा let's understand how you can attend sessions like these for free. First of all, you have to visit divergentclasses.com, and यहाँ पे you can explore and understand कि हम करते क्या हैं, what we stand for. To book a trial class, you can message me on WhatsApp or call me personally, and I'll guide you through the process. उसके अलावा there is another way to book a trial class. Just clicking on book trial class button, and it will direct you to a form. इस फॉर्म को जस्ट आप फिल कर सकते हैं to book a trial class. Just typing in a full name, WhatsApp number, email ID, which exam are you preparing for, what difficulties are you facing, and when should we call you. And you can book a free call. Now you can explore the site and understand what we are doing. And for further information and better contact, you can always message me on WhatsApp and even call me personally.